वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट वर्सेस ईज ऑफ प्रोटोटाइपिंग टॉपिक लिया था, तो उसी टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम एक केस स्टडी लेंगे बबलिनो का। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट वर्सेस ईज ऑफ प्रोटोटाइपिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी अवेयर is that the hardware and the programming choices you make will depend on your skill set. So there are different options are available for this prototyping platform. So that is readily available in the market. We'll see it. So there are 4 choices that can be readily available. So first one is the AT8051, that is AVR, is a microcontroller. Then second one is the Arduino also uses the microcontroller as a main controller. Third one is the Raspberry Pi microcontroller, which is generally used for the IoT projects. And fourth one is the general purpose computer, which is a microprocessor based computer systems. So these are the 4 choices available for the hardware and software programming in the Internet of Technology or Internet of Things projects. So user can choose one of these option and it can be used to develop the final prototyping, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि जब भी एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है that is based on the IoT technology, so it has first sketching is done, means its design will be done by using a pen and paper. After that we'll decide the actually which components required and how it can work. So for that we make a first sample project. So for it requires the hardware plus software, because the IoT needs the hardware part as well as software part also. So in that we can choose the one of the controller from these 4 choices and develop our prototype, ठीक है। तो जिसमें हम Arduino रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। रास्पबेरी पाई जो कि IoT बेस है, तो उसमें भी इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पाइथन. Python is generally used for programming in the Raspberry Pi microcontroller. For Arduino kit, it requires the microcontroller programming. And last one is the general purpose computer system. So that consists of a microprocessor. Second point, the smartphone or the computer options are particularly convenient if you already have one available, at which point they are effectively zero cost. Means अगर आपके पास स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, so you need a very less cost to develop a prototyping. So by using this computer you can easily connect one of these 4 choices, that is Arduino, Raspberry Pi microcontroller, by using a USB to the computer system and install the operating system in that, and you can do the programming. The smartphone is also useful. Suppose you have to make a simple project which is based on the robotics, so you can control that robot by using a simply a smartphone. So you develop an app, and that app can be installed in the smartphone and it will connect to the robot by using a Wi-Fi, and according to that app you can control the various activities of the robot, like its arm movement, leg movement, okay. So the smartphone is also useful. If you have anyone
available means that smartphone is available or a computer is available, so you need a very less cost for developing the prototyping. If your device has a physical interaction, you will find that a PC is not optimized for this kind of work. मीन्स अगर उसमें कोई फिजिकल इंटरेक्शंस है, ठीक है, डिवाइस में, सो एट दैट टाइम द पीसी इज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क, so you need the another solution for that. Next point, an electronic prototyping board unsubstantially is better suited to this kind of work. तो जो हमने ये फोर्स ऑप्शंस देखे या चॉइसेस देखे, ठीक है, AVR, Arduino, Raspberry Pi and general purpose computers, so these boards are readily available in the market, so it will be a better suited for this prototyping design. You have to only program in this board and connect the different sensors or the actuators with them and connect that board with the help of USB port to the computer, and it can be ready to use. So that helps the development part and it makes the development part very easy. So there are some points which are discussed in that. First one, for many beginners to hardware development, the Arduino toolkit is surprisingly good choice for it. So for beginner, the hardware development is somehow difficult. So in that part, this Arduino kit will be easy. So you can make only a programming in the Arduino toolkit and connect the different sensors in that, and it can be ready to use. Second point, the input output choices are basic and require an ability to follow the wiring diagram. ठीक है, तो अगर इसमें जो सेंसर्स एज ए इनपुट रहेंगे, एक्चुएटर्स एज द आउटपुट, सो दैट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फॉलो द वायरिंग डायग्राम. ठीक है, मीन्स आर्डिनो किट जो किट है उसमें GPIO पिंस होते हैं, जनरल इनपुट आउटपुट पिंस. ठीक है, तो वहाँ पे आप एज अ उसे इनपुट भी असाइन कर सकते हो और उसी पिन से आप आउटपुट भी असाइन कर सकते हो. दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो कौन से पिन के लिए एज आप इनपुट असाइन कर रहे हो एंड कौन से पिन के लिए आप वहाँ पे आउटपुट असाइन कर रहे हो, तो ये डिसाइड होगा प्रोग्रामिंग में. ठीक है, सो दैट इज़ द फैसिलिटी अवेलेबल इन द आर्डिनो बोर्ड एंड सेम इन द रास्पबेरी पाई माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो. सो द इनपुट आउटपुट चॉइसेस आर बेसिक थिंग. ठीक है, तो डिपेंड रहेगा कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें कितने इनपुट्स है, आउटपुट कहाँ पे देना है. ठीक है, तो उसके लिए एक वायरिंग डायग्राम लगेगा. दैट इज़ द बेसिक थिंग एंड आइडियली अ बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इट रिक्वायर्स द बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, हार्डवेयर का, कि कौन से डिवाइसेस एज ए इनपुट रहेंगे, कौन से डिवाइस आप आउटपुट में कनेक्ट करोगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, yet the interaction from the programming point of view is essentially simple, wiring and reading values to and from the GPIO pins. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि रास्पबेरी पाई में और आर्डिनो में भी GPIO पिंस है. दिस 808051 is also a microcontroller, so on that kit there is also GPIO pins. We can program this GPIO pin as the input or output depending on our प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो वहाँ पे हम सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, सो इट विल एक्ट एज अ इनपुट. सो वी कैन असाइन वन पिन एज ए इनपुट फॉर द टेम्परेचर सेंसर एंड द आउटपुट फॉर द डिफरेंट एक्चुएटर्स, और वी कैन डिस्प्ले दिस टेम्परेचर ऑन द डिस्प्ले. सो वी कैन टेक द अनदर पोर्ट एज अ आउटपुट पोर्ट एंड इट कैन बी कनेक्टेड टू द डिस्प्ले. ठीक है, इस टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, वो टेम्परेचर सेंस करेगा एनवायरनमेंट का. सो दिस विल एक्ट एज ए इनपुट.
ठीक है, तो वहाँ से बेसिक डेटा आएगा, ठीक है। देन योर माइक्रो कंट्रोलर विल प्रोसेस दैट डेटा एंड जनरेट्स द आउटपुट। सो आउटपुट पिन असाइन करने के बाद वी कैन कनेक्ट अ डिस्प्ले टू इट so that temperature will be shown on the display. So that is a simple example. Next, and the language is C++. So there are variety of languages supported by these Arduino kits or in Raspberry Pi. So in Raspberry Pi basically Python is generally used and which is easy for programming. So we can also use the C++ because C++ is also object oriented language. So in this 88051, that is a microcontroller, so in that we can use a C++ language to develop the programming. Next point, the IDE, that is integrated development environment, is a long form of this IDE. So pushes the compile code into the device where it just runs automatically until you unplug it, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसके लिए लगता है आईडी, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पस। सो इन दैट you compile a code on into the device, okay। तो means integrated development environment में we can write the code, that code will be tested, okay। means we can compile it, check it, debug it. After debugging we can run it and check its output in the IDE also, ठीक है। तो बहुत सारे IDE में ऑलरेडी फैसिलिटी होता है कि वी कैन कंपाइल इन इट एंड चेक द आउटपुट, टेस्ट द आउटपुट, फाइंड द बग्स इन दैट। मीन्स अगर प्रोग्राम में कोई एरर है, ठीक है, सो वी कैन करेक्ट इन, तो हम सॉफ्टवेयर में ही उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन कंपाइल इट एंड चेक इट। अगर वो फाइनल हो जाता है देन वी कैन बर्न दिस कोड इनटू द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। जो भी किट आप यूज़ कर रहे हो आर्डिनो या रास्पबेरी पाई, देन वी कैन सेव दिस कोड इनटू द दिस डिवाइसेस कंट्रोलर or in microcontroller, and after that it can be run and we can check the output. So these are the different points of discussion for the cost versus ease of prototyping topic. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक केस स्टडी लेंगे। सो थैंक यू।